Hey, hi guys, so moving on to the next questions based on recursion. Now int main f4, the value of n becomes 4, right? So if 4 greater than 0, so I am writing if 4 greater than 0, so your condition is true. So when your condition is true, it means you're evaluating this also, this also, this also, because they are part of this if statement. So n minus 1, so this becomes function 3, and then your printf statement n, and value of n is 4, because it is not n is equal to n minus 1. Had it been n is equal to n minus 1, here 3 would have been printed, but it is n minus 1, so n is 4, so 3 4, and again function 3. So now you will call this 3 greater than 0 condition true, right? So it is function 2, then your 3 gets printed, then again your function 2. Now when you call this function 2 greater than 0, so what is happening? It is function 1, this 2 gets printed, again function 1. Now when you call this function 1 greater than 0 condition true, so this is your function 0, 1 gets printed, and again function 0. So when you call this function 0 greater than 0, condition is false, so nothing will happen. So now see guys, when you call this f1, 1 is getting printed, so I am directly writing 1 here. When you call this f2, so when you call this f2, so what is getting printed? 1, 2, 1 is getting printed, so I am writing 1, 2, 1. When you call f3 function, so what is getting printed? It is getting printed 1, 2, 1, 3. So I am writing 1, then 2, then 1, then 3, then 1, 2, 1, right? So what is the final answer then? So final answer is first your 1, then your 2, then this 1, then 3, then 1, 2, 1, then your 4, then 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1. That's the answer, right? Good question. Now let's change this question. I think it's clear, right? So now let me change this question slightly, and let's suppose if I am writing that n is equal to n minus 1, n is equal to n minus 1. Now see what is happening. I am simply added one statement, n is equal to n minus 1, n is equal to n minus 1. I am calling f4. So what is happening? If 4 greater than 0, your condition is true. So when your condition is true, you are calling f. Now see, n is equal to n minus 1, so value of n is now 3, and that 3 you are printing, so this is 3. Again n is equal to n minus 1, so n becomes 2. You have changed the value of n. Now when you call this function, n is now 3, so when you call this function, it becomes f2, then your 2 gets printed, and then f1. Now when you call this function 2 greater than 0, then it is f1, and then 1 gets printed, then your f0. So it is 3 because n becomes your 2, n becomes your 1. So when 1 minus 1, your 0, right? Now when you call this function f1, so what is happening? It is f0, right? That 0 gets printed, and this is minus 1, right? So ये तो गए. तो जब f2 कॉल किया, f2 तो कहीं और, f0 भी किया, कुछ नहीं हुआ. f1 जब कॉल किया तो क्या आया? 0 आया. f2 को जब कॉल किया तो क्या आया? 0 आया, 1 आया. सिर्फ 0 1 प्रिंट हो रहे हैं f2 को कॉल करने पे, तो यहाँ पे है 0 1. तो इसका फाइनल आंसर क्या है? सबसे पहले प्रिंट हुआ 0, राइट, फिर प्रिंट हुआ 1, फिर प्रिंट हुआ 2, फिर प्रिंट हुआ 0, फिर प्रिंट हुआ 3, फिर प्रिंट हुआ 0, फिर प्रिंट हुआ 1. So that's your final answer. अगर हम यहाँ पे चेंज करते हैं स्लाइडली, ठीक है. So now moving on to the next question. It is based on linked list. So let's suppose you have a linked list here. I am taking only 3 nodes. 1, 2, 3. Let's suppose the address is 100. This is 200. This is 300. And this is your null. So your head is pointing at the first node, right? So अगर linked list के डिटेल में जाना है यार, तो मैंने कम से कम 20-30 प्रोग्राम लिंक लिस्ट के पूरे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बेसिक प्रोग्राम की एक अलग से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को जाके जरूर देखना. आई थिंक उससे इजीएस्ट वे तुम्हें नहीं मिलेगा कोडिंग करने का लिंक लिस्ट.
दैट्स द बेस्ट, राइट। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। योर हेड इज पॉइंटिंग एट 100, सो इफ 100 इज इक्वल टू कंडीशन हुई फॉल्स, तो स्टार्टिंग में लेके गया 100, ठीक है, ये कंडीशन हो गई फॉल्स, तो मैं नीचे आया, एफ हेड का नेक्स्ट, ये हेड का डेटा है एंड दिस इज योर नेक्स्ट, ठीक है, ये मेरे दो मेंबर है, ये हेड मेरा वेरिएबल है, तो हेड नेक्स्ट इज व्हाट, नेक्स्ट इज 200, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा रहा हूँ हेड का डेटा, 100 का डेटा क्या प्रिंट कराया मैंने 1, फिर मैंने 200 फंक्शन को कॉल किया, 200 इज इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स हुई, 200 का नेक्स्ट क्या आ गया 300, और 200 का डेटा मैंने प्रिंट कराया 2, 300 फंक्शन को कॉल किया, ठीक है, इज इक्वल टू नल कंडीशन फॉल्स, 300 का नेक्स्ट क्या है नल है, 300 का डेटा क्या हुआ 3, तो ये रिकर्सिव ट्री बना। तो सबसे पहले वैल्यू क्या प्रिंट हुई, सबसे पहले वैल्यू प्रिंट हुई 3, फिर क्या प्रिंट हुआ 2, और फिर क्या प्रिंट हुआ 1, तो आंसर इज 3 to 1, so it is a recursive way to display the linked list in reverse order, right? So basically you are simply displaying the linked list in your reverse order using the recursion. Thank you guys, take care, bye.